Break-even point, Module 220 of Financial Management. In this module, we'll have the discussion on what is called break-even point, its significance, and the way it is calculated. Some people think that break-even point is not a very good thing for an organization because it is a point where there is no profit and no loss. And every business is meant to be earning profit. यानी अगर हमारे सारे businesses profit earn करने के लिए हैं और हम ऐसी situation पे हैं जहाँ ना profit है ना loss है, तो फिर ऐसे business का क्या फ़ायदा? So break even point is defined in one way that it is a point where the business is neither getting any profit nor there is any loss. But there is another way of looking at it. यानी जो दूसरा जाविया है जिससे हम इस ब्रेक इवन पॉइंट को देख सकते हैं वो ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताता है. यानी अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, हमारे पास बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई जाती हैं, उनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है लेकिन उनके लिए सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं कि उनको फर्दर बाहर से फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है. So the positive thing about the break-even point is that it tells us about self-sustainability. Another way of actually talking about the break-even point is that this is the point where the contribution or the contribution margin becomes equal to the fixed cost. हमने पिछले मॉड्यूल में बात की थी कि contribution margin कैसे कैलकुलेट होता है. It is revenue minus variable cost that is equal to contribution margin. और अगर ये contribution margin fixed cost के बराबर हो जाए, then contribution margin minus fixed cost, the result will be zero because two are the same, and hence that will be the break-even point. So these are the three ways of explaining or interpreting the break-even point. Now let's have a look at the formula of the break-even point. We have different formulas of calculating break-even point. One way to do is to calculate break-even in terms of rupees or dollars, that is in terms of sales. यानी कितनी sales generate की जाएं, कितनी sales की जाएं जिसके नतीजे में business उस point पे पहुंच जाएगा कि उसकी cost और expenses बराबर हो जाएंगे. So that is called the break-even sales level. The formula is that fixed costs are divided by the contribution margin ratio, and when we do that, we get that point of sales. हमें वो amount of sales मिल जाएगी कि इतनी sales अगर business generate कर ले तो वो break even कर रहा होगा. The formula is also expressed in terms of fixed cost multiplied by sales divided by sales minus variable cost. This is actually the same formula written in another manner. Now, the other way of calculating at the break-even point or looking at the break-even point is in terms of number of units. यानी किसी business को कितने units sell करने की ज़रूरत है in order to do break-even, यानी जहाँ पर वो no profit और no loss पर पहुँच जाएगा. तो अगर हम units में इस point को calculate करना चाहें, the formula is that fixed cost has to be divided by the amount of contribution margin. So once we do that, we get the number of units which are required to do break even. Now have a look at this graph. This is a graph of break even. This is called the break even graph or break even chart. In this graph, we have got three lines. The one which is horizontal to the x-axis, the blue colored line, is the fixed cost. And we can see that on the x-axis, जब हमारे units of production या sales बढ़ते जा रहे हैं,
तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं आ रही. Then we have got the two other graphs. One is related to the total revenue and the other one is total cost. So total cost is the sum of fixed and variable cost. Now if we look at the graph, we see that there is a red portion which shows loss. यानी ये वो एरिया है कि यहाँ तक अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम लॉस के अंदर होंगे. And the right side shows profit, which is the green area. And in between these two areas, there is a point of intersection. This point of intersection is the point of intersection of total revenue and total cost. यानी वो point जहाँ पर हमारी total cost और total revenue की amount बराबर हो जाती है. That is the point of intersection. और ये वो point है जैसा हमें ग्राफ से नज़र आता है कि ना इसमें हमारे पास लॉस है और ना इसमें हमारे पास प्रॉफिट है. तो ब्रेक इवन पॉइंट की डिस्कशन को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि ब्रेक इवन पॉइंट एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है. ये सिग्निफिकेंस इसकी इस हवाले से भी है कि हमें ये पॉइंट बताता है कि हमें कम से कम पहले स्टेप में एज द फर्म एज द बिजनेस कहाँ तक पहुँचना है जहाँ पर हम लॉसेस को अवॉइड कर देंगे. याद रखिए लॉस का मतलब ये है कि हमें हर साल अपनी जेब से बिजनेस में कुछ फंड्स इंजेक्ट करने हैं, अदरवाइज बिजनेस अपने लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकेगा. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रेक इवन पॉइंट. एंड द सेकेंड थिंग एज वी डिस्कस्ड that this is the point where business becomes self-sustainable. It does not require any funds from outside. And above this point, जैसे ही हमारी sales, जैसे ही हमारे units sold इस point से बढ़ेंगे हमारा profit बढ़ना शुरू हो जाएगा. And the graph also indicates जैसे जैसे हमारी number of units sold और production बढ़ती चली जाती है हमें नज़र आ रहा है कि हमारा profit यानी revenue और कॉस्ट का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा. एंड द बिजनेस विल हैव मोर एंड मोर प्रॉफिट.